Welcome to MPS Motivators, a unique online teaching and learning platform. This is Janendra Kumar standing in front of you. Before starting this session, I would like to wish you all a very gracious good morning. So, good morning, friends. In this session, I am going to teach you about figures of speech, which are also known as poetic device. Friends, this session is very important for the students of class 10 as well as those who are preparing for CTET examination. Because in the examination of CTET, a few questions are asked related to figures of speech. Friends, there are so many figures of speech, but in the beginning I will discuss with you a few figures of speech like simile, metaphor, and personification. Friends, here is the definition of figures of speech. We have to understand what a figure of speech is. A figure of speech is an expression used to make a greater effect on the reader or listener. फिगर ऑफ स्पीच एक एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग रीडर यानी पाठक या फिर लिसनर यानी श्रोता पर प्रभाव डालने के लिए, एक बृहद प्रभाव डालने के लिए किया जाता है. इट इंक्लूड्स मेकिंग कंपैरिजंस, कॉन्ट्रास्ट्स, एसोसिएशंस, exaggerations and constructions. फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट के सेंस में किया जाता है, विरोधाभास प्रकट करने के लिए किया जाता है, एसोसिएशंस यानी संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, एग्रेशंस मीन्स अतिशयोक्ति पूर्ण. यदि किसी चीज को हमें अतिशयोक्ति करना हो, उस पर विशेष बल देना हो, तो भी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं. कंस्ट्रक्शंस के लिए भी किया जाता है, यानी निर्माण दिखाने के लिए किया जाता है. इट ऑल्सो गिव्स अ मच क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे. हम लोग जो कुछ भी देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं अपने रीडर्स को, पाठकों को, उसके संदर्भ में क्लियर पिक्चर देने के लिए किया जाता है. आई हैव मेंशन्ड अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज सिमिली. व्हाट इज अ सिमिली? अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. सिमिली एक वर्ड या फ्रेज होता है जो दो असमान चीजों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम लोग लाइक या एज का प्रयोग करते हैं. लाइक या एज सिमिली के रूप में प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क, माने ऐसा चेहरा जो मास्क की तरह दिखाई देता हो. मतलब जिसको देखकर, जिसके चेहरे को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वह फेस है या फिर फेस पर कोई मास्क लगाए हुआ है. व्हाइट एज स्नो यानी बर्फ के समान उजला. वी कैन से दैट हिज फेस इज व्हाइट लाइक स्नो और व्हाइट एज स्नो. उसका चेहरा बर्फ के समान उजला है. So friends, here I have discussed with you the simile, like and as. You can take its screenshot. The second figure of speech that I am going to discuss with you is metaphor. Friends, here you can see that I have explained the second figure of speech, metaphor. A figure of speech in which a word or phrase is used to denote one kind of object or idea in place of another
to suggest a likeness between them. फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी शब्द या फ्रेज का प्रयोग एक प्रकार के वस्तु या विचार दूसरे प्रकार के वस्तु या विचार के बीच लाइकनेस दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे लाइफ इज अ हाईवे। एक्चुअली हाईवे इज यूज्ड फॉर हाई पाथ। हाईवे का प्रयोग हम लोग हाई पाथ उच्च पथ को दर्शाने के लिए करते हैं, बट हियर द वर्ड लाइफ इज कंपेयर्ड टू a highway. Here life is said to be a highway. So the word life is used with highway to compare the likeness between them. जीवन एक उच्च पथ के समान होता है। कह सकते हैं कि जीवन एक उच्च पथ है, उच्च मार्ग है। So friends, here the word highway is used as a metaphor. Her eyes are diamonds. उसकी आंखें हीरे हैं। Here diamonds are used for denoting a very costly gem, very costly stone, which is the form of carbon. But here we are using diamonds to denote the quality of her eyes. उसकी आंखें डायमंड्स है, उसकी आंखें हीरे हैं। हियर द वर्ड डायमंड्स इज यूज्ड एज अ मेटाफॉर। ही इज अ शाइनिंग स्टार। वह एक चमकता हुआ तारा है। इफ अ पर्सन इज अ स्पेशल वन इन सम फैमिली और कंपनी और ग्रुप, वी कैन यूज दिस वर्ड to denote the extraordinary quality of that person. Here the word star is used as a metaphor. In the last example, I have written the snow is a white blanket. Snow यानी बर्फ एक उजला चादर है। Here the word blanket is not used in the sense of the actual blanket which we use to wrap ourselves around. So here the word blanket is used as a metaphor. So friends, now you can take its screenshot. Friends, the third type of figure of speech is personification. Here I have explained it. Representation of a thing or abstraction as a person or by the human form. When we express anything giving it the human form, it is called personification. जब हम किसी निर्जीव वस्तु को पर्सनिफाई करते हैं, इट मीन्स एक ह्यूमन बींग का रूप देते हैं, तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। सूर्य हम लोगों के ऊपर मुस्कुराया। हियर द सन स्माइल्ड, द वर्ब स्माइल्ड इज जनरली यूज्ड with a person, with a human being, but here we have used with the non-living thing, the sun. So here the sun is used as the personification. In the next example, the mountain was talking to me. पहाड़ मुझसे बात कर रहा था। It means कि the mountain was expressing something to me with its features in such a way as if it were talking to me. Mountain मुझे अपना एक्सप्रेशन अपने फीचर्स के द्वारा इस तरह से दे रहा था मानो वह मुझसे बात कर रहा था। So the word mountain is used as a personification. So friends, now you can take its screenshot and
With this figure of a speech and with the explanation of this figure of a speech, I am ending this session. In the next session, I will discuss with you about some more figures of a speech. Till that time, I am taking a short time separation from you and suggest you to revise all these figures of a speech. These are going to be very helpful to you in preparing for the CTET examination, because a few questions related to figures of a speech are certainly going to be asked from you. So friends, if you like this video, don't forget to like it, comment it and share it to your friends, and also download MPS Motivators by going to Play Store. Thank you. Have a nice day.